Good morning students. Today topic is vapor pressure. As we have discussed in previous videos about solution, its solubility, solvent. Suppose I take a solvent in a closed vessel and one in an open vessel. After some time, the molecules which have more average kinetic energy will escape into environment. But if I put lid on it, what will happen? Vapor are not able to escape. Initially, rate of evaporation is great, more less. After some time, more number of molecules are in vapor phase, and when they strike back on the wall or a liquid surface, they will again condense back. They will condense back. Condensation means vapor to liquid, and after some time, rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. At this time, pressure exerted by vapors on the liquid surface with which it is in equilibrium is known as vapor pressure. तो आप देख रहे हैं बच्चे, जब आपका रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम. वी हैव स्टडी इट इन केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ इस समय जो वेपर्स अपना प्रेशर डालेंगे लिक्विड सरफेस पे, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर. अब क्वेश्चन आता है कि मैंने अगर वाटर डाला है तो वेपर प्रेशर इतना आया है, तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड. नेचुरली जब मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करके वेपर स्टेट में जाना है, तो अगर आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वेपर जल्दी बनेंगे और देयरफॉर मोर वेपर प्रेशर विल बी देयर. और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इट विल गो आफ्टर सम टाइम इनटू वेपर्स. इट विल हैव लो वेपर pressure. For example, if I take diethyl ether or bromine water and water, these are three different solutions. Bromine water has non-polar interaction, weakest London forces, therefore it will break easily intermolecular forces and goes into vapor, followed by diethyl ether and water have hydrogen bonding, so it will take time to break intermolecular forces and goes into vapor. So the first factor which affect vapor pressure is nature of liquid. Second, temperature. Vapor pressure is directly proportional to temperature, as we know with the increase in the kinetic energy. Due to increase in temperature, more molecules will go into vapor phase. So, it is directly proportional to vapor pressure. More temperature, more vapor pressure. So, arrange the following in increasing order of their vapor pressure at given temperature: bromine, ethanol and water. One more thing, if I add a non-volatile solute in this liquid, what will happen? Here I have taken a pure solvent, here I have added non-volatile solute.
and we will see what will happen to the vapor pressure. As we can see in the diagram, here at the surface only solvent molecules are present, and as we know, evaporation is surfacial phenomenon. So, here more number of solvent molecules will pass into vapor phase, whereas in case when I add non-volatile solute, non-volatile solutes are those which do not vaporize at room temperature. So, only water molecules will rise up and non-volatile solute will remain at the surface. What we see? As lesser number of solvent molecules are present on the surface, lesser will go into vapor phase, and naturally it will have less vapor pressure than that of pure solvent. This is the effect of adding non-volatile solute in a solvent. So, what we came to know? It was always observed that vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, so take care of it. Next question is, एट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? Here we come across another law known as Raoult's law. Known as Raoult's law. As you can see in a diagram, there are two components A and B. Both are volatile. Both are volatile. So, when a binary solution contains both components which are volatile, then vapor pressure solution is sum of both the components. According to Raoult's law, at a given temperature for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. Product of pure component and mole fraction. Pure components का मतलब है it is assuming कि दूसरे component का कोई effect नहीं है. So, we will denote it by P naught A, vapor pressure of pure component. So, according to the law, we have PA is directly proportional to XA. XA is mole fraction. Mole fraction is number of components of A upon total number of components in the solution, that is Na upon Na plus Nb. So, we have PA is equal to P naught A XA. Similarly, for component B, we have, yes, partial pressure of B is directly proportional to the mole fraction of B, or PB is equal to P naught B XB. इन दोनों का सम हो जाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के आपने यहाँ से PA की वैल्यू ले ली और यहाँ से BB की वैल्यू. As we know, sum of mole fraction of components is always equal to 1, as we have studied during concentration. So, instead of XA, I can write 1 minus XB. Substituting it, we will have following equation: P naught A minus P naught A XB plus P naught B XB. और इसमें हमने P नॉट A प्लस XB को कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया P नॉट B माइनस P नॉट A. ये आपका है टोटल प्रेशर. हमने ये एक्सरसाइज इसलिए की है
कि बच्चों अगर आपके पास दोनों के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन। बट अगर मैंने आपको एक ही का मोल फ्रैक्शन दिया है तब भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो हमने यहाँ लिया है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। Here mole fraction of A is equal to 1 and you know this is the maximum value. It is the maximum value. So यहाँ पे आपका XB will be equal to 0. Alright, इस समय आपका जो वेपर प्रेशर होगा that will be equal to as that of pure solvent. As that of pure solvent. अब अगर मैं मोल फ्रैक्शंस इंक्रीज करती हूँ स्लोली, वेपर प्रेशर विल also rises up and we will get following graph. यहाँ पे हमने मैक्सिमम 1 लिया हुआ है तो A क्या है 0, तो जो भी वेपर प्रेशर है वो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट P। अब बच्चों आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखिए तो आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है या जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। यस, इट इज़ B because it has more vapor pressure as compared to A. Now, अगर instead of volatile component I have added one non-volatile component, what will happen? Again, according to Rolle's law, अब क्योंकि वो वेपर फेस में आया नहीं है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, मान लीजिए B आपका है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, putting that in the Raoult's law, what will happen? P is equal to PA plus PB, पर आपका PB है नहीं, वेपर में गया नहीं, no vapor pressure. So we have total vapor pressure is equal to PA which is equal to P naught A into XA, और हम यहाँ पे XA की जगह क्या लिख रहे हैं 1 minus XB. So we will have P naught A XB equal to P naught A minus P. आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो दिस इज कॉल्ड अनदर फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, एंड this P naught A minus P upon P naught A is called relative lowering of vapor pressure. यानी कि आपका रॉल्स लॉ अनदर फॉर्म में लिखा जा सकता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So all this for today video, and you can watch this video and ask your queries on my phone number. Thank you.